Assalamualaikum. Standard 9 SS Chapter 14 India's Location, Geological Structure and Physiography Part 2. Means Part 1 was Chapter 30 that we have completed. Okay. The landform, which is irregular and has some altitude on the surface of the earth, is called physiography. It includes mountains, plates, plains, etc. जो लैंड फॉर्म है ना ऊपर, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्स, प्लेन्स, ये सारा जो है ना उसे हम फिजियोग्राफी कहते हैं. कैन सी क्लियरली इन द पिक्चर सो मैनी नेम्स हैज़ बीन गिवन: लेक, प्लेन, ओशन, आइलैंड, गल्फ, राइट, सी वॉल्केनो, माउंटेन. So different types of upper part we can see on the earth. 14.1 Forms of relief features. On the edges of physiography, India can be divided into the following physiographic regions. First, Northern Mountains region. Second, Great Northern Plains. Third, Peninsula Plate. Fourth, the Coastal Plains. Fifth, Archipelagos. So these are the 5 types in which physiography has been divided. Now here, this is the map given here. Okay, India relief. So in 5 points, or we can say in 5 types of physiography, we will see first Northern Mountainous region. This is an important natural region of India. It is known as the Himalayan mountain system, spread over 2400 km in west-east direction in the north. उत्तर की दिशा में जो भी ये जो माउंटेन्स की रेंज है ना पूरे हिमालयन, वो सारा जो है उसका इसमें शामिल होता है. इट इज़ एन आर्क शेप. इट्स विथ रेंजेस बिटवीन 240 km to 320 km. The Himalaya is not a single mountain but is a complex of many mountain ranges. हिमालय सिर्फ कोई एक पहाड़ का नाम नहीं है, बहुत सारे पहाड़ों की रेंज है पूरी, जिसे हम हिमालय कहते हैं. Going towards east from Afghanistan, it extends up to Myanmar via India, Nepal and Bhutan. It has more span in Tibet in the north. It is a part of the mountain system known as the Pamir Node. So you can see the area which it includes. Okay. Himalayas on the whole can be divided into 2 divisions: Northern Himalayan region, Eastern Himalayas. Okay, क्योंकि एक ही तरफ नहीं हो रहा है, नॉर्थ से थोड़ा ईस्ट भी है. So we can make them in 2 parts. First, Northern Himalayan region. There are 3 mountain ranges parallel to each other. The northern range is called the Greater Himalayas. This is the loftiest range among the Himalayas, wherein there are more than 40 peaks which exceed height of 7000 meters. ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो हमको समझाया हुआ है ना, उनकी हाइट के बारे में बताया हुआ है. मोस्ट फेमस अमॉन्ग देम इज़ माउंट एवरेस्ट, विच इज़ 8848 meters high. It is on Nepal-China border. It is known as Sagarmatha in Tibet. Other famous peak is Godwin Austen or K-Square. To break it, 8611 meters, which is the highest peak of India. There are 3 distinct ranges in Himalayas which are almost parallel to each other. In the Greater Himalayas, there are some high mountain passes such as Jalipla, Nathula, Shipkila, etc. Mansarovar, which is considered to be a sacred holy place in China, is located in this range. So this was the description about Northern Himalayan range. ठीक है, यहाँ पे कौन सा माउंटेन कितने हाइट है और कहाँ कहाँ है वो सब हमको बताया हुआ है. Here in this table we have given the name of the mountains and the heights in meters also. Okay, you can see. Second range in the south of the Greater Himalayas is also spread
in wider area. It is called Central Himalayas or the Lesser Himalayas. With a width ranging from 80 to 100 km, this range includes mountain ranges like Pir Panjal, Mahabharat, Naktiba, etc. Many hill stations have developed in this moderately high range. Some of these hill stations are Dalhousie, Dharamshala, Shimla, Mussoorie, Ranikhet, Almora, Nainital, Darjeeling, etc. So are the names we are familiar with. Okay, Gangotri, Yamunotri, Badrinath, Kedarnath, Hemkund Sahib, etc. are famous holy places. ठीक है, तो ये जो सेकंड रेंज है ना, इसमें ये सारे जो एरियाज़ है वो कवर हो रहे हैं, जिसमें से हम कितने प्लेसेस तो जानते भी है. ठीक है, कुल्लू, कांगड़ा एंड कश्मीर आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल नेचुरल वैलीज इन दिस रीजन. थर्ड range situated in further south is known as Shivalik, means outer Himalayas, and most of it falls within India. It is about 10 to 15 km wide and has an average height of 1000 meters. Peculiar valley formations have taken place in this range, which are covered by gravel, stones and thick sediments. Locally these are known as Dun, means Dehradun, Patlidun, Kotharidun, etc. So these are the geographical information you can understand very well. Second point, Eastern Himalayas. Ranges situated in the eastern part of Himalayan ranges have lesser height. Some of them are more famous as hills. इसमें जो माउंटेन्स है उनकी हाइट जो है थोड़ी कम है, जो कि हम हिल्स कह सकते हैं. These hills in Eastern Himalayas are spread as smaller ranges. Among them, Patkai Hills are situated in Arunachal Pradesh, Naga Hills in Nagaland, and Lushai means Mizo Hills in Mizoram. These hills are located near the eastern border and have their continuation in Arkanyoma range of Myanmar. Garo, Khasi and Jaintia hills are in Meghalaya. Mountainous regions have more rainfall, so dense forests have developed here. As this is a forested area, roads and railway have not developed much. जो भी हिमालयन एरिया होता है वहाँ पे अक्सर बारिश ज़्यादा ही होती है, और रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर जो है ग्रीनरी भी ज़्यादा दिखाई देगी, और फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से वहाँ पे रोड और रेलवे का जो है विकास ज़्यादा दिखाई नहीं देता. सेकेंड पॉइंट, ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन. नॉर्थर्न को हम नदर्न भी बोल सकते हैं, ठीक है, और साउथर्न हो तो सदर्न. ओके, दिस northern plain is located between the northern mountainous region and the southern peninsula. This plain is formed due to the alluvial sediments brought by Himalayan rivers such as Satluj, Ganga and Brahmaputra. At some places, the layers of the sediments are about 50 meters thick. As these plains occupy very large area in North India, these are known as Great Plains of Northern India. तो 50 मीटर जितनी इसकी जो है मोटाई होती है. द प्लेन इज़ अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग. इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड. इट्स वेस्टर्न पार्ट इज़ नैरोवर देन द ईस्टर्न part. The plain is almost a level land. None of its part is higher than 180 meters from sea level. प्लेन का मतलब ये होता है कि पूरा क्लियर लैंड होता है, खुली ज़मीन. The plain is very narrow near Delhi. The Satluj plain lies to the west of Delhi, while the Ganga plain is in the east. This plain is considered to be the most prosperous region of India. Important cities such as Delhi, Kanpur, Lucknow, Allahabad, Varanasi, Patna, Kolkata, etc. are situated in this plain. Okay, so ये जो areas है ना, ये सारे areas में ये जो है places भी है सारी. सिंधु river and its tributaries Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj originate in Himalayas. ठीक है, तो ये जो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ जो एरिया है वो पूरा हिमालयन और पानी, फॉरेस्ट, ये सारा सब जो है वहाँ पे ज़्यादा है. वहाँ पे देखना आप नॉर्थ में ठंड के सीज़न में ज़्यादा आपको ठंड दिखाई पड़ती है, जैसा कि हमने
फेमस दिल्ली का पता है, ठीक है ना। दिल्ली में ज़्यादातर ठंड में क्या सिचुएशन होती है वो हम न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं। नाउ जनरली अ रीजन बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड DOAB, दो आब, एक्चुअली इट इज़ कॉल्ड दो आब, ठीक है। इट इज़ उर्दू वर्ड, मीन्स दो मीन्स टू एंड आब मीन्स वाटर, ठीक है। तो जहाँ पे दो रिवर मिल रही होती है ना वहाँ पे कहते हैं दो आब, ठीक है। दस द प्लेन विच इज़ फॉर्म बाय 5 रिवर इज़ कॉल्ड पंजाब। मोस्ट ऑफ दिस प्लेन इज़ इन पाकिस्तान। तो ये जो एरिया है, ठीक है, हमें जो नदी वाला जो एरिया है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे उसके पानी के हिसाब से जो एरिया मिल रहा है उसे उस हिसाब से नाम दिया जा रहा है। अगर दो नदी मिल रही है तो दो आब, और 5 नदी जहाँ पे मिलती है, ठीक है, इसलिए उस एरिया का नाम जो है पंजाब, ठीक है। पंज यानी 5 और आब मतलब। ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफी द प्लेन इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: बाबर, तराई, बंगार, खदर। अ small and narrow belt of gravels and stones lies parallel to the river from Sindhu up to Tista river in Shivalik foothills. This belt is almost 8 to 16 km wide. It is called Bhavar. The Terai region, which is more humid and marshy, comes next. Dense forest and diversified wildlife are seen here. ठीक है ना। ये जो पानी के साथ जो जुड़ी हुई ज़मीन का हिस्सा है वो ऑफकोर्स उसके अंदर ग्रीनरी और ऐसा सब तो होना बनता है। द ओल्ड एलिवियम इन द प्लेन इज़ कॉल्ड बंगार ड्यू टू कंसिस्टेंट डिपोजिशन इन डेवलप्स अ टेरेस शेप विच इज़ एट अ हायर लेवल देन फ्लड प्लेन्स। द न्यू सेडिमेंट ऑफ द फ्लड इज़ कॉल्ड खदर।